हेलो, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। मैं बहुत अच्छा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा ही रहूँ। आज बहुत एक्साइटिंग दिन है। टुडे आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू, सो आई जस्ट थॉट दैट आई शुड कम एंड टॉक टू यू अबाउट दिस स्पेशल। बिफोर आई टॉक अबाउट इट, छोटी बात। मार्केट के अंदर में जब मैं एंट्री किया था तो आई स्टार्टेड विद कमोडिटीज, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि that whole experience of trading commodities first gave me such a solid foundation of financial markets. Because अगर आप देखो तो अगर ग्लोबल ट्रेड्स को आप ऑब्जर्व करो तो इवेंचुअली कमोडिटीज आर द इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एसेट्स और रियल एसेट्स जो ट्रांसफर होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। सो अगर कोई कमोडिटीज को समझता है तो वो ग्लोबल ट्रेड को बहुत अच्छे से समझता है, और जो ग्लोबल ट्रेड को अच्छे से समझेगा वो फाइनेंशियल मार्केट को भी अच्छे से समझेगा। तो माय एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिंग कमोडिटीज वाज आई थिंक अमेजिंग डिसीजन, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट मैंने वो कॉल लिया था। ऑल्दो उस समय कोई इसके बारे में बात नहीं करता था, कोई कमोडिटीज ट्रेड नहीं करता था। उसके बाद जब मैंने करेंसी पे ट्रेडिंग चालू की तो वो अगेन सोने पे सुहागा निकला, बिकॉज कमोडिटीज और करेंसी में बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है। और मार्केट पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि दोनों इन टेंडम वर्क करते हैं, बिकॉज सबका मदर ऑफ ऑल कमोडिटीज एंड करेंसी इज डॉलर। तो डॉलर जब रिएक्ट करता है तो ऑब्वियसली हर चीज रिएक्ट करता है। और जो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए, यू नो दैट आई हैव बीन सो एम्फसाइजिंग एवरी वन ऑफ यू टू लर्न अबाउट डॉलर। ये रीजन यही है क्योंकि मैं सालों साल से डॉलर को फॉलो कर रहा हूँ और मार्केट में उसको देख के पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। एक और ऑब्जर्वेशन मेरा है कि मार्केट साइकिल्स पे वर्क करते हैं, तो कभी कुछ चलता है कभी कुछ चलता है। फॉर एग्जांपल अभी इक्विटी मार्केट गिरा बट यूएसडी आईएनआर बढ़ा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव मार्केट का मिले। और शायद मेरा जो एक्सपीरियंस है मार्केट का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट हैज गिवन मी सच अ सॉलिड 360 डिग्री पर्सपेक्टिव कि मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके तो पैसे कमा ही लेता हूँ। तो because I am so actively contributing the knowledge through Elon Markets, through YouTube channel, और इतना इन्वॉल्व रहता हूँ कि मैं सबको नॉलेज प्रोवाइड करूँ, आई रियलाइज दैट समहाउ जो नए लोग ट्रेडिंग करने आए हैं या जो लोग ट्रेडर्स बनना चाहते हैं, उनका एक है ना स्पेसिफिक मायोपिक थॉट प्रोसेस है कि मुझे सिर्फ एक्सपायरी थर्सडे का ही काम करना है या मुझे सिर्फ एक्स वाई जेड काम करना है। तो मेरी उनसे एक राय है, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ बिकमिंग अ गुड ट्रेडर, एंड इट टुक मी मेनी ईयर्स। ऐसा नहीं है कि कल सोचा और परसों मैं ट्रेडर बन गया, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी एक राय है कि आप अगर ट्रेडिंग एज एन ऑक्यूपेशन में जाना चाहते हैं, विच इज नॉट अ बैड ऑक्यूपेशन, ट्रस्ट मी। जो लोग कितना भी बोले, हमारी सोसाइटी उसके बारे में कितना भी नेगेटिव बात कर ले, बट ट्रेडिंग एज एन ऑक्यूपेशन इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड ऑक्यूपेशन आउटसाइड। इनफैक्ट यूएस के अंदर में लॉयर, डॉक्टर्स, ये लोग भी ट्रेड करते हैं, और ट्रेडर को एक अच्छे रेपुटेड ऑक्यूपेशन के रूप में माना जाता है। गोल्डमैन सैक्स, लेमन ब्रदर्स जो पहले था, या जो भी आप मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स बोलोगे, उन सब में ट्रेडिंग डेस्क एक बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन है। बट समहाउ इंडियन सोसाइटी के अंदर में उसको लेके एक मान्यता है कि जो कुछ नहीं करता वो ट्रेडर बन जाता है, विच इज नॉट द केस। ट्रेडिंग, इफ डन इट द राइट वे, इट कैन ऑल्सो गिव यू इनफ अपॉर्चुनिटीज टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। लेकिन व्हाट इज द राइट वे? तो ये जो स्पेसिफिक काम हम करते हैं ना कि थर्सडे एक्सपायरी को ही ट्रेड करेंगे या मैं सिर्फ यही स्ट्रैटेजी पे, मुझे लगता है ये एक लिमिटेशन का एक तरीका है। यू शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। प्लस सिर्फ एक एसेट क्लास या एक इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करना, इट कैन बी गुड टू स्टार्ट विद, बट इवेंचुअली यू शुड एस्पायर टू बिकम अ मल्टी एसेट ट्रेडर। तो आज के जो वीडियो में मैं आपको मल्टी एसेट ट्रेडिंग, उसका रिलेवेंस, उसका सिग्निफिकेंस, और वो आप कैसे सीखे, वो सारी बातें करूंगा। आज मैं आपके लिए लॉन्च कर रहा हूं एक मल्टी एसेट ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। ये इंडिया का पहला प्रोग्राम होगा, और इस प्रोग्राम के अंदर में 5 मेंटर्स होने वाले हैं। खाली मैं अकेला नहीं रहूंगा, मैं तो नॉलेज पूरा देखूंगा, बट साथ साथ में मेरे 4 और मेंटर्स होंगे जो एक स्पेसिफिक एरिया में स्पेशलाइज करते हैं, और आपको एक मल्टी एसेट, कमोडिटी, करेंसी, इक्विटी, ऑप्शंस, इन सब का एक्सपोजर देके एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ऑक्यूपेशन के अंदर में डालने में आपको हेल्प करेंगे। तो लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ ऑल 5 of us who are their mentor for all of you. So here we are. So we have other 4 lovely human beings.
someone I'm really admire. People who are exactly doing what they should do in market, which is trading and helping people learn trading as well. So we have my favorite Chetan Bhai as usual. Chetan Bhai, hello. We have Hi, hi. Kaushik, we have Souradeep, and we have Saanando. All four of them have some unique qualities. And what we did is, जब मैंने अपना ये आइडिया प्रेजेंट किया था कि मुझे ना एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है इंडिया में जिसमें मैं अपने जैसे लोग तैयार कर सकूं और अपने से बेटर लोग तैयार कर सकूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऑल फोर ऑफ देम वॉलंटियर्ड कि सर ये मिशन बहुत अच्छा है, ये विजन बहुत अच्छा है कि क्यों ना इंडिया के अंदर में एक ऐसी फौज तैयार की जाए जो ट्रेडिंग के अंदर में एक नाम करें और हमारी सोसाइटी भी ट्रेडर्स को रिस्पेक्ट दे। तो ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, मल्टी एसेट ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है जो आप मिस नहीं कर सकते, एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट टुडे। बट बिफोर दैट आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, कुछ सवाल जवाब करते हैं, और मैं एक एक करके सवाल जवाब में घुसूंगा। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू इनवाइट चेतन भाई। हेलो चेतन भाई, Hi, कैसे हैं? Vivek bhai. How are you? Is my फंटास्टिक, voice clear? फंटास्टिक, एकदम लाउड एंड क्लियर। और चेतन भाई, क्यों आपसे पहले बात करना चाह रहा था, बिकॉज एक तो बाकी सब यंग बहुत है, हम लोग हम उम्र है। So, Vivek bhai, we are about to retire. मैं तो नहीं करने वाला हूँ रिटायर। तो आई फिर एम तो गोइंग टू पुट माई we are लास्ट still ट्रेड। young. So basically, हाँ, age is just a number. वो बोलते हैं ना कि कर ये खाली माइंड में है. करेक्ट तो करेक्ट, we must all say, मैं अपने क्लास में सिखाता हूँ. You should always be like a 15-year-old boy, या looking for your first date. तो वो एक्साइटमेंट नॉलेज का होना चाहिए सीखने या के लिए. एब्सोल्युटली, करेक्ट करेक्ट। तो कुछ कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। सो बिकॉज यू हैव सच अ रिच एक्सपीरियंस ऑफ मार्केट, थोड़ा आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी लोगों को बताइए। आपने कैसे चालू किया, आपने क्यों किया, क्या क्या किया, और अभी आप क्या कर रहे हैं, और आपके लिए क्या मायने रखता है ट्रेडिंग। ओके, सो विवेक भाई, जैसे आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 17-18, आई थिंक सो. द इंस्पिरेशन वाज 1992, वेल्थ क्रिएशन. दैट वाज द इंस्पिरेशन. वो क्रैश आया वो अलग बात है हर्षद मेहता का, लेकिन जो वेल्थ क्रिएट हो रहा था तो ऐसा लगा कि नहीं कुछ है. एंड आई थिंक सो probably as a trader I have made a lot more mistakes than other traders. कारण क्या था विवेक भाई, उस टाइम में नॉलेज का जो फ्लो था जो आज है प्रोबेबली नहीं था. हम्म, सो 92 से आई थिंक सो इंटरनेट केम इन फुल फोर्स फ्रॉम 2003-4, एंड देयर इज वेयर वी गॉट एक्सपोजर टू द आउटसाइड वर्ल्ड, एंड अपना मार्केट धीरे 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 मेच्योर कर रहा था. यू नो हम्म, विवेक भाई, 92 में इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ 1 month सेटलमेंट. या, वहां से करते करते आज 1 day सेटलमेंट में आ गए. हम्म, राइट. सो वी हैड द कैश मार्केट में ही वो डेरिवेटिव सेगमेंट रहता था जिसको अपने बदला बोलते थे. या, आज वो चेंज हो गया. आज वी हैव अ सेपरेट डेरिवेटिव मार्केट, सेपरेट कैश मार्केट. सो वहां से हम लोग ने मेच्योर किया. बट हैविंग सेड दैट, मेरा, अगर आप कोई भी ट्रेडर से बात करोगे तो अगर उसने 2 बार अपना अकाउंट ब्लो नहीं किया है तो एक्चुअल में वो ट्रेडर नहीं है. हम्म, So he's too defensive. Probably he's not a trader even though he's saying that. So सीखते 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 क्या एक लर्निंग जो मैं आज खाली 1-2 लाइन में शेयर करना चाहूंगा कि एज अ ट्रेडर, नंबर 1, यू हैव टू इवॉल्व. हम्म, हमेशा कुछ ना कुछ मार्केट नया सिखाता है, और अपने को क्या है ना, मार्केट के नीचे बैठ के हाथ जोड़ के सीखना है. राइट. जो स्ट्रेटेजी आज आपको पैसा दे रही हो सकती है वो नेक्स्ट 5 साल में नहीं दे. हम्म, सो डोंट गेट इमोशनली अटैच विद द मार्केट. उसके साथ आपको फ्लो करना होगा. दूसरा बात क्या, जब मार्केट का मोमेंटम या फ्लो आता है उस टाइम और आपको पता है कि ये गलत फ्लो है, जैसे आपने देखा होगा कि कल का था फ्लो, हम्म, निफ्टी ने इंटरमीडिएट ट्रेंड तोड़ा था. क्या किया, 650 का तोड़ के उसने 720 ले गया. हम्म, सबको एक बार डरा दिया. राइट. सो एट दैट पर्टिकुलर फ्लो यू हैव टू स्टे आउट कि भाई आज इसका दिन है, इसका फ्लो है. जब वो फ्लो वापस आपके फेवर में आ रहा है, वापस नीचे जा रहा है, वापस घुसना पड़ेगा. हम्म, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू हैव टू बी लाइक द लिक्विड स्टेट. आपने विवेक भाई देखा है गंगा को कैसे हिमालय से नीचे जाती है, ऐसे कितना सटल है, लेकिन उसमें इतना
तेज है तरार कि वो हिमालय को भी काट देती है, लेकिन वो फिर उसको पता है कि रास्ता कहाँ से बनाना है. So that is what a trader is all about. You can't fight. You have to flow with the market direction. और मार्केट में आप लड़ नहीं सकते. ट्रेडर को आप जितना भी बोलो, ट्रेडर को कहीं ना कहीं टाइम करना होगा. इन्वेस्टर खड़ा रह सकता है, बट ट्रेडर को टाइम करना होगा. वो टाइमिंग कब आता है? जब आप पता लग जाता है कि आज मेरा दिन नहीं है, मेरे को उड़ जाना है. करेक्ट. आज मेरा दिन है, मेरे को यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी में मैक्सिमाइज करना है. So चेतन भाई, you started as a trader और आपने as an analyst चालू किया था, फिर उसके बाद you ओके, become सो a मैंने trader? पहले ट्रेडर एड चालू किया, फिर मैं एनालिस्ट बना. बिकॉज वो ग्रेल जब जब सब विवेक भाई जब 16-17 साल 18 साल लेते हैं ना, तो कोई लगता है कि कोई सेट फॉर्मूला चाहिए. वो फॉर्मूला की खोज में काफी साल निकल गए, और फिर पता चला कि कोई फॉर्मूला नहीं है. Well said, very well said. हाँ, तो वो करते 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 probably today where I stand and today probably आज मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं कहीं ना कहीं आदमी को गाइड करके उसका लर्निंग कर्व को जरूर कम कर सकता हूँ. कोई ऐसा मिस्टेक नहीं होगा जो विवेक भाई मैंने नहीं किया है. So there are 3 major mistakes in trading. Probably I'm taking other mentors' time, but I'll take that time. Why? Because it's very Please take your important. time. Take your time. 3 बड़े मिस्टेक्स है. एक है ओवर ट्रेडिंग. क्या होता है कि जब आप राइट होते हो ना, तो आपको लगता है विवेक भाई आप ही मार्केट में हो, बाकी सब जो है आपको पैसा देने के लिए मार्केट में बैठे हुए हैं. तो फिर जहां दूसरी बार तीसरी बार राइट होते हैं ना, आपको लगता है कि सब अब ये क्या है कि मैं पूरा ही कमा लूं. राइट, जो मुर्गी अंडा दे रही है उसको काट के पूरा ही निकाल लो एक बार में. सो दैट इज ओवर ट्रेडिंग. सेकेंड क्या है, ट्रेडर का जो स्टेज 1 जो नया नसाड़िया ट्रेडर आता है और वो ट्रेडिंग एस्पायर करता है, उसको स्टॉप लॉस से बहुत डर लगता है. स्टॉप लॉस का नाम से वो कांप जाता है, तो वो स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता. और वो लगाता है तो वो अपना स्ट्रेस में आ जाता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के पहले उसका बेचारा का 500 ग्राम पसीना छूट जाता है, वजन 500 ग्राम कम हो जाता है पसीना से. राइट, सो दैट इज अ नंबर 2 प्रॉब्लम विथ ट्रेडर्स. And 3 is over leverage. Right? Over leverage का मतलब ये नहीं है, मैं राइट वर्ड यूज करूंगा, राइट क्वांटिटी लेवरेज में, दैट वुड बी द बेस्ट वन. सो विवेक भाई, एक साइकोलॉजी है कि आपका मैंने आपको एक वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम दे दिया. इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रोबस्ट सिस्टम है. पहली बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, आपका हिम्मत रहेगा. दूसरी बार ट्रिगर हुआ, पसीना धीरे धीरे चालू हो गया. तीसरी बार आपने स्टिल हिम्मत करके आधा क्वांटिटी लिया, ट्रिगर हुआ, आप आउट हो गया. चौथी बार जो ट्रेड होता है वो लास्ट 20 ट्रेड्स का हाईएस्ट प्रॉफिट होता है और आप नहीं रहते. सो ये कॉमन प्रॉब्लम है. तो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, मेंटल प्रिपेयर्डनेस. और क्या होता है कि जब हम स्ट्रेटजी ढूंढने लग जाते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा मैकेनिकल होने की बात करते हैं, और हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन है उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं. हमको लगता है कि मेरा लेफ्ट साइड वाला ब्रेन है लॉजिकल ब्रेन, खाली उसी को यूज करो, क्योंकि 1+1=2. तो ट्रेडिंग में तो 1+1=2 होगा ही, तो पैसे बना लेंगे. बट जो राइट साइड वाला ब्रेन है, विच इज मोर इमोशंस, विच इज मोर टेम्परामेंट, वो तैयारी, जैसा कि आपने कहा ना कि टुक यू टाइम टू फिगर आउट कि राइट फॉर्मूला क्या है. फाइनली यही पता लगा कोई फॉर्मूला ही नहीं है. So that experience of going through that rigor of the market and then finally facing the rejection from the market कि चल तू यहाँ आई क्यों था. तो I think mentorship is all about rewinding or preponing that experience कि यार जो experience हमारे हो गए उससे आप वो सीख लो और mental preparation कर लो, तो then half of the battle is won. बाकी half तो obviously you still have to put the effort of your own strategy, right? Correct. सो विवेक भाई, आपको याद होगा अपने एक वीडियो बनाए थे, मार्केट टॉप कब होगा. हाँ, 18,500 बोला था. मस्त वीडियो था वो, मैंने शॉर्ट आज किया मैं था. खाली और एक हिंट दे देता हूँ, जस्ट फॉर द यूएस, दिस इज आउट ऑफ द टॉपिक बट स्टिल वुड लाइक टू से दैट. विवेक भाई, मैक्सिमम टाइम जब फेड टाइटन करता है, मैक्सिमम टाइम मार्केट बॉटम एक इवेंट से आता है जिसमें
बहुत सरप्राइज होता है, या तो कोई कंट्री डिफॉल्ट करता है, कोई बड़ा कंपनी डिफॉल्ट करता है, Correct. और वी शेप फॉल आता है. So if Hmm. in 2008 when Fed was tightening, it was Lehman Brothers. Correct. 2001 में आपने देखा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आया था, जिससे सीधा मार्केट 10-15% नीचे गिरा था. सो Fed tightening most of the cases leads to certain event which we have not uh, encountered or discounted. Correct. तो ये ख्याल रखिएगा सारे यूजर्स को कि भाई अब ये जैसे टाइटनिंग हो रही है इतनी फास्ट, नेक्स्ट 6-8 मंथ्स में एक इवेंट आ सकता है which might surprise the market. It might not be a black swan event कि बहुत ऐसा 50 साल वाला, बट कोई ऐसा इवेंट आएगा जिससे 10-12% का फास्ट मूवमेंट आ सकता है. सही है. So this is for those who have not even joined the mentorship program. Keep this in mind. सर मतलब क्या बताएं, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर योर विजडम्स, सो थैंक यू सो मच फॉर Thank बीइंग you. पार्ट Thank ऑफ you. दिस लवली इनिशिएटिव्स. एंड सो एक लास्ट ये जो थॉट प्रोसेस है मेरी कि मल्टी एसेट, Right. व्हाट डू यू थिंक व्हाई मल्टी एसेट नॉलेज इज नीडेड? Correct. So Vivek bhai, to a certain amount, credit should go to you why I am in option. ठीक है, क्योंकि मैं टेक्निकल्स करता था बहुत ज़्यादा, एंड टू बी एन ऑप्शन टीचर प्रॉबली मेरे को ऐसा लगा मेरा ऐसा फोटे नहीं था, राइट. तो मैंने प्रैक्टिकल ऑप्शन किया था, बट व्हाट आई रियलाइज्ड इज जैसे आपने मेरे को बताया कि नहीं आप सच पाएंगे ऑप्शन, आप पढ़ाइए. सो व्हेन आई गॉट इनटू ऑप्शन, प्रॉबली आई रियलाइज्ड दैट माय मोजो वाज इन ऑप्शंस, राइट. क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा प्रोडक्ट था जहां पे मैं कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकता हूं जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज ह्यूज, व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन टेक्निकल्स. Today at 15,700 Nifty is closing. If you tell me कि सर आप फ्यूचर बेच दीजिए या कुछ आप कर दीजिए, वो पॉसिबल नहीं है. लेकिन ऑप्शंस में you can create such strategies where your risk is limited and your reward is 4x 5x. तो मैं by default, if you had not bought me in, probably मैं उतना डीप जा ही नहीं पाता, राइट. सो मैं अपने एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि हर एक आदमी को जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा उसको पता नहीं उसका मोजो कहां पे है. तो ये जरूरी नहीं है कि आप मल्टी एसेट सीख रहे हैं तो आपको सब इंप्लीमेंट करना है, नहीं. Probably you get your mojo. Probably if you're not, if you're good in technicals, continue with technicals, but at least you know something in options which you can apply. You might do something in currency. So Saanando sir is very good in macro. He might just give you something which might help you in the technical part of long term or swing trading. Correct. So Kaushik bhai hai, he is doing all the chartings, advanced chartings, and he's got this. So probably once you join the dots, that is where I think so you get an edge. जो अपने बोलते हैं ना विवेक भाई, वो इवेंट जो है होली ग्रेल, आई थिंक सो वो होली ग्रेल नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं आप जब कनेक्ट करते हो लाइफ में तो वो आ जाता है. सही है. आई थिंक इट्स वेरी वेल आंसर्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस. सो यू होल्ड ऑन देयर. नाउ आई विल कम बैक टू यू लेटर टुवर्ड्स द एंड. सो लेट मी जस्ट add Souradeep into this discussion. Okay, this is in the sequence of my association with them. So Souradeep के साथ मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ. I think we have been together for more than 5 years now. और Souradeep is incredible in what he does. So Souradeep, a brief आपके बारे में, आपका जो लाइफ रहा है, and why do you think multi-asset knowledge is very important for a successful trader? Souradeep, we can't hear you. You are in mute. Am I audible, sir? Yeah. Thanks, sir. It has been a very pleasant journey, an enjoyable journey, rewarding journey for last 5 years for each of us, and I have really enjoyed. Hopefully, it goes for long time. We are launching this multi-asset trading mentorship program. To give a brief about yourself, the interest in about market. Souradeep, you have to be a bit louder. We can't hear you. Am I audible? Yeah, better. Yeah, so I'm putting the mic in front of me. So my interest regarding the market started when I was in the college, engineering college, okay.
And that time, my father was trading, and I was an engineer doing my engineering, and I used to see that market fluctuating a lot. That was 2006, 2007, and if you remember, from 2004 to 2008, market went up from a level of 2000 to 6000. I'm talking in terms of Nifty 60. So that was a great, and everything. What I understood, that you should only buy, and then and that will make money. And there was no concept of technicals, risk management. Only thing we knew is that every day you need to go to the market, buy RN, you need to go RPL in multiple lots, and then finally what will happen is that price will go up and you will book per lot 20,000, 30,000 the next morning. Right. But what happened with the 2008 crisis, that actually made us feel that okay, there is the other side of the market too. And after engineering, I went to MBA. But somehow the big loss that we made in 2008, because we didn't know about anything about the market, was always in mind that पैसा तो बन सकता है, पैसा बनाएंगे भी, इसमें वापस आना है और पैसा बनाना है. तो जैसे कि 2010 में मैंने पास आउट किया, तो उसके बाद मैंने HSBC और क्रिसिल में एज ए फंडामेंटल एनालिस्ट आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट 3 years there, and then after that I went to futures first. तो फ्यूचर फर्स्ट में मैं क्या करता था, लो सल्फर डीजल जो है उसका कैलेंडर स्प्रेड इंटरनेशनल मार्केट में आई यूज्ड टू ट्रेड. एंड बट आई while I was trading that, the instrument that I was trading would move 1 or 2 ticks over a week. You Souradeep, we understand? can't hear you. It's not very clear. You have to be a bit louder. Can you hear me right now, beta? Can you hear me Still, now? still, there is a lot of scope for betterment. So, Souradeep, you fix up your mic. I'll get back to you. Let me just go to Saanando, and we will continue from where you left later. Yes, sir. So, why Saanando? Because again, in the order of us getting associated, so Saanando is the one who has been extremely active on the commodity and currency side. Someone who has seen the market, commodity, currency for many years. Saanando, over to you. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Hello, everyone. If those who are listening to me, I'll start with my experience. I'll start with. I'm a foreign exchange trader, a short-term foreign exchange trader. Looking back, I think I was meant to be a foreign exchange trader, could be God's hand or something else. Because when I was young, I was asking myself, if money is what we need, why we can't print it? Then it finally, over the period of time, I landed in MBA college, and somehow I directly got interested in the foreign exchange market only. I never looked at stocks, never Nifty, nothing. Just foreign exchange market, Euro USD, GBP USD, and all the global market. Thankfully, my first mentor was also a global teacher. He was a Euro USD and gold option seller in Chicago Mercantile Exchange. So from him, I was able to learn part of fundamental. And then, like Chetan sir said, my journey also began in searching for the Holy Grail, which are never there, nowhere. Anyone who is trading and successfully, consistently trading will only tell one thing, that you'll have to know where the market is and act accordingly. You can't fight the market, and you'll have to flow with the market only. Be it foreign exchange, be it commodities, equities, indices, options, anywhere. Knowing the market helps us to decide what kind of risk we are going to take. So unless we know that, as per me, it will be half done. So my journey went on. It took me 8 years to be a successful trader, to be very frank. But initially, I never lost many money. Somehow, I were betting very less. So loss were very small. So my recovery path was good. But what embarrassing was to me was, initially I worked as analyst. A large part of my career I was analyst, and I was giving trades
higher success rate, because I believe in deep analysis and higher success rate. Why? Because if our success rate is high, then pressure is less on psychology and risk Yeah, management. yeah, That is why I try to be as much accurate as possible, but it's as we have to be with the markets. Never gets to 100%. Nobody never wins. It's not possible. And let me also tell you something which I have realized over time, and also looking back at my mentors, that we are all here to make money. No doubt mm, about that. We want to make money with that so we can do other things. But Warren Buffett sir had so much money. Then my first mentor was a millionaire in US dollar. Why he was a 70 years old citizen? Why he was trading? I now realize it is also about winning, making winning bets. Be there. So, what is market for me? For me, it's gonna stay with me. It's a part of me. Until I am alive, it's gonna stay with me. The foreign exchange market. So why no multi-asset trading? That's let me cover up. There are through mm, multi-asset trading, like it's may not be important, but knowledge of multi-asset really helps. I started with Forex, but to trade effectively, I had to know about commodities and bonds. So knowing about these instruments sometimes give early signals. For example, there is a signal. Let me give, like Chetan sir, an advance meant to all those who are listening. There is a bond market signal, an inversion signal. Whenever short-term interest rates gets inverted, there is a recession follow-up. This has never failed for past 50 and 60 years. In mm. April, we had an inversion this year. In June, currently an inversion going on. So those who are investors, buy only, stay out of the market as much as possible. But we traders, we gonna make both sides. We are not investors when we are trader. We're gonna sell, we're gonna buy. I hope I was able to clear up some thoughts, sir. Absolutely, absolutely. And I think I've met so many people while in my pursuit of commodities and currency. And I still remember when I joined commodities market, people used to call me idiot because that time no one was looking to join commodities in India. सबको लगता था इक्विटी में ही सब कुछ है और commodities कौन join करता है. So I have not met many people who are so passionate about commodity and currency market like me. So great to have you as part of the team, and you are an abyss of knowledge in this domain of macro commodities and currency. So thank you for enlightening and great Thank sessions you. as always. Thank you, sir. So let me now change the shift. So Souradeep will come back to you after we are done with Kaushik. So let me just add Kaushik. We have the latest association, and Kaushik is again someone who has impressed me so much with his passion for trading, and he comes from a very unique background. But he's trying to change the goalpost for himself and for us. Kaushik, all to you. आप Yeah, hi, बताइए. good evening, sir. या थैंक यू. आप बताइए व्हाट्स योर बैकग्राउंड हैज बीन, ट्रेडिंग कितना पैशनेट है, एंड व्हाई मल्टी एसेट. राइट सो मैं ट्रेडिंग में मैं मार्केट्स को पिछले 10 साल से ट्रैक कर रहा था एंड जी. फ्रॉम 2014 आई स्टार्टेड ट्रेडिंग विद स्मॉल अमाउंट बिकॉज आई वाज फ्रेशली ग्रेजुएटेड एंड आई वांटेड टू एक्सपीरियंस की मार्केट क्या होता है. तो कैश मार्केट में ट्रेड करता था विद अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी with a very small capital, and over a year and half वो capital swipe out हो गया, and then I started learning markets and क्या structure होता है and all that thing. So journey started from 2014 in markets, and I spent about a decade now in academics. तो मैं एक formal academics, इससे पहले तो एक college run कर रहा था, business school. So spent 10 years in academics and then joined e-learn market. So journey अभी तक ये रही है. So from 2018 I started tracking markets very seriously. मतलब यहाँ से अब या तो passive income कैसे generate हो सकती है उसके पीछे का ट्राई था, and from 2018-19 I became profitable, consistently profitable from that. And from 2020-21, so now making consistently profit from there. So this has been my journey in markets, and because of passion into financial market,
I took a big step of leaving a big position in academics and joining e-learn markets. Yes, so it was one of the best decisions for us, which you took on our behalf. So you are amazing in what you are doing, and this was a market calling for you. That people in market need you more than people in academics. By the way, just to inform everyone who is listening that Kaushik is very humble, so he's not mentioning it that he was a dean in a big university. तो वहाँ से shifting a base and doing something for retail investor, empowering traders with his right strategies, the thing which he believes work, he makes money out of them. That needs a lot of gutsy to take a bold call. So Kaushik, fantastic to have you as part of the team. Uh, Dosto, I am going to share with you what are the things which each one of us are going to do, because we have not just added five of us just for the sake of it. कहीं ना कहीं हम पांचों के अंदर में एक यूनिक स्टाइल है, यूनिक स्ट्रैटेजी है, यूनिक मार्केट को देखने का तरीका है. So we are going to share with you the structure which we are going to follow in this program. But before that, let me just invite Souradeep from where he left. He is going to start. So Souradeep, from Future First days, you were a trader in Futures First, which is one of the largest trading desk in India, trading global markets. Start from there. Yes, sir. So, future, am I audible right now in a proper Yeah, way? perfect. This is best. Thanks. So, in Future First, I was trading calendar spread of low sulfur gas oil in the European market. Basically, it is an intercontinental exchange. It is pan-Atlantic market, which is connecting USA and the Euro. So, so we were trading there, and I was trading with the low sulfur gas oil calendar spreads. The thing that I used to trade is used to move 2 ticks, 3 ticks in a week, probably in 10 days. So it was very slow. So my always in my mind it was to go back to those days of 2006, 7, 8 when I enjoyed the fluidity of the market, and that is the time I decided to be into the market and join the Indian market and trade into the Indian market and come back to the domain. Because of my stint in international trading desks, I had various exposure to global analysts and global traders, and that actually built my foundation of technical analysis very well. And that is the main core thing that I use in my market outlook, market in viewing market, analyzing the market, and predicting market, and that is the driver of my success that has come. So, and you know that I have been with you for 5 years, and you know the journey, and that's also. So I can tell one thing to all the learners that again I've never seen anyone making so accurate prediction on crude oil. I think there is something going on between Sharadeep and crude oil. There is some illicit relationship going on because he know exactly what she's doing. No, no, So jokes you apart. remember we had a session in last year March when oil was 50, and without this war also we said that oil would reach around 100. And if you remember, before the actually Ukraine crisis took place, Yeah, by yeah. by the time of Feb, oil was before the crisis also oil was at 93, 94. So it was almost there. Yes, and that video was in ELM live, so it is there on record. People know exactly your prediction, so there is no doubt about it that your technical analysis, which has been an outcome of your trading experience in market, is working very well. And I know that how much effort you put, 16 hours, 17 hours a day, to train yourself further, because ultimately market is a ever growing learning journey which we all have to keep on going through. Great. So okay. So let me bring all five of you in a frame. Okay. So let me add all of you in this frame. So great. So this is the most amazing team of mentors who are here to help all of us to become serious long-term trader. Okay. So why do I say serious long-term trader? So we have no intention of making you a long-term investor. Our intention is that yes, trading is for everyone. That is the primary motto which we run. There is a trader in everyone. Okay, हर किसी के अंदर में एक trader बैठा हुआ है, and the trader has to be nurtured like a baby, and it has to be grown like a baby. So वो काम हमको करना है,
and we are five of us are committed. So what the way we are structured it that I am the guy who is going to be responsible for your knowledge. So across the board, every single knowledge which you get delivered in this program will be monitored, mentored by me. Souradeep will be responsible for technical analysis because his expertise is technicals and he trades using the technical. Saanando is going to be focused on currency, commodities, and macro. Chetan Bhai is the master in options and trading psychology, and he's the guy who is like, the agony aunt. So if you are facing any trouble, you just have to call Chetan Bhai, ki bhai kya kare? And the bhai will say that this is how you have to approach. So he's the best guy. He's like the elder brother for every one of you. And Kaushik is superb in advanced patterns, in trend analysis. And because he's so cool and composed person, he's amazing with his trading psychology. So ये trading mentorship program एक trader नहीं कर रहा है. There are five people onboarded involved in this learning exercise. So this is very unique. So let me just take you through this, screen sharing, quick screen sharing, और मैं आपको दिखाता हूँ ये इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो और कहाँ मिलेगा. So I hope you guys are able to see my screen. Can anyone please confirm? Yeah, we are able to see. Yeah, thanks. So this is the web page, elanmarkets.com/TMP, and this is the ELM trading mentorship program. It's a multi-asset trading mentorship program. If you want more detail, you can fill up this form and we can connect to you. The utility of this program is that we have five amazing people, expertise in specific thing, and they are giving you their expertise. Apart from them, we have these three amazing guys, Raja, Pawan, and Vinay. They are the associates, TMP associates, and they are equally involved in hand holding and every single market participant who are part of TMP, right from opening an account with a broker till to trading view demo to everything, and real time query resolution, so that you actually get that hand holding properly. So five associates and five mentors and three associates, eight people involved with you on a real time basis through WhatsApp group. So every month we run a batch, which you'll get a WhatsApp group, and we'll be involved in a real time basis with every one of you. So in case you are stuck anywhere, all of us will have your number saved so that you can exactly get your answer solved on real time basis. Okay. uh, the structure of the course goes something like this. So this is the broader structure of the course. So there are multiple modules starting from technical taken by Souradeep. And by the way, every module will have evaluation. तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमको आपके evaluation में पता लग जाएगा कि आप कहीं और हैं और आपको समझाना भी और ज़रूरी है. Then we have options by Chetan Bhai. Then my model of relative strength, which I use to live in this market, and practical application of that model. Then Kaushik with Renko charts, strategy based on Renko charts, and multi-time frame analysis. Then risk management, trader psychology, trade plan, trading karma, commodities, crude, natural gas. Then Saanando talking about currency, commodities, and finally we talk about how to use all the tools, trading view and stockage, to create your own edge in market and make money from the market. Whoa, this is really exciting, and I think this is one program which has been designed so it's like a diamond being crafted properly for you to take full advantage. So अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं पार्ट टाइम और फुल टाइम, do explore this program. Talk to our team. Find out whether this is the right thing for you, because trading as an occupation obviously has a lot of glamour. There is no doubt about it. But there are people who have done things wrong. There are people who have done phenomenally. I mean, big people I know, some of them made money from trading and created wealth out of investing. So जो initial work है trading के अंदर में, that can be done very wisely if you join this kind of a program. Um, Anything, gentlemen, from your side? Anyone would like to add something? Sir, I want to add a point that Yes. why this mentorship program is important, because trading itself is an art.
तो हम इसको बोलते हैं एक करती की विद्या है, जितना आप काम करोगे इतना सीखोगे, राइट? सो एवरी आर्ट दैट यू लर्न you need a mentor for it. So I Yeah. know the mistakes that I made majorly was I was a very good analyst. मतलब पैटर्न बनने के बाद उसका एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सब पता होता था, टारगेट आ भी जाता था तो भी एग्जिट नहीं करता था क्योंकि ग्रीड होता था कि और शायद ऊपर चला जाए, राइट? सो दैट साइकोलॉजी मेंटरशिप इज मोर इम्पोर्टेंट. So that we are going to cover in this TMP, which is a classical hand holding that is needed, right? So this is an art and hand holding is needed. So I guess that makes this program very unique. Ekdam sahi. So I will I just, would share my experience of school now that Kaushik comes from that huge academics background. तो मैं अपने स्कूल की बात बोलना चाहूँगा. I was not a very good student in school. मैं बहुत ही below average student था. So and my father got very worried about me कि यार ये क्या कर रहा है अपने life के साथ में, because he knew that I'm intelligent. It's just that sports, swimming and all those में काफी time लगाता था. Then he went to he identified that my biggest problem was maths. बिकॉज मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है स्कूल में ना जो आपको ड्रैग कर सकता है. अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आपका स्कोर अच्छा होने ही नहीं देगा, वो ओवरऑल एवरेज. So my father went to my teacher of maths, teacher BP Terry. I mean, he's the one who made me what I am today. And my father said that आप इसको mentor करो, इसको पढ़ाना नहीं है, इसको मेंटर करना है, बिकॉज ही डजंट नीड a plus b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इसके लिए मुझे बीपी टेरी साहब नहीं चाहिए, मुझे इसको मेंटरशिप चाहिए ताकि ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, आप इसको पाथ दिखाओ. एंड he was, when he was teaching me, he was 81. And what a lovely teacher, what a mentor he was. He actually changed me totally. और जो मैथ्स में मैं पहले 100 में से 4-5 नंबर लाता था, फिर मैं 100 में से 4-5 नंबर कम लाने लग गया. दैट मीन्स माय स्कोर वाज 95, 96, not because of concepts, but because of the hand holding, because of so much rigor he gave into that whole journey, that I was able to succeed. So Kaushik, I take your point that life में mentor तो चाहिए. और because especially tough time, अभी जैसे मार्केट इतना खराब था, बट वी नो दैट वी टोल्ड ऑल आवर mentees that this is not the market to play, this is not the market to venture out. आप अगर audacious होके कुछ करोगे तो मार्केट पिटाई करेगा आपका. तो these all are languages, these all are discussions which we have to do with our students so that they know exactly when not to do, what not to do. Souradeep, please go ahead, I interrupted you. No, no. Thank you, sir, for the lovely description of mentorship. I just wanted to add a point that once you are into the program, you are part of the family for whole of your life, because mentorship program, the old students, they come back to us, they ask the questions, irrespective of how many years they have been the mentorship with connected with us and the course is completed. So this is a great advantage that you remain the part of the total ecosystem, the environment, the family, and that helps you to grow because market will be changing. Yes, that's thank you so much for highlighting that this is not a 5-month, 6-month arrangement. This is a lifetime association. So the moment you join a mentorship program, your number gets saved on our phone, and whenever you need us, we definitely try to be there until unless there is some casualty or something. Then we always try to be there for you guys to talk immediately. And also, I would say that because I run a trading firm with so many traders, I always invite my TMP candidates to come and experience the trading floor, see the trading desk. Until as you experience the vibrancy and the energy of a trading flow, actually you don't feel that conviction that अरे ट्रेडिंग करके पैसे बन सकते हैं. जब आपके बगल में लोग बैठ के बना रहे हैं तब आपको लगेगा कि हैं ये कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ. So I invite people always that come to Calcutta, come and sit with us for a day, experience the trading. In fact, as part of the multi-asset mentorship program, we'll have those 3 days dedicated where anyone who's interested in coming will welcome them to experience that trading in live market with us. Apart from the live sessions, which Chetan by and we all conduct, where live market के अंदर में trade करके या live strategy discuss करके, we try to give you as much practical exposure as possible. Because finally प्रैक्टिकल नहीं होगा तो फिर वो बुक्स तो बहुत है उसकी, हाँ यूट्यूब में वीडियोस भी बहुत है,
बट प्रैक्टिकली उसको उतारना कैसे है, दैट इज ऑल अबाउट मेंटरशिप. भाई चेतन भाई, यू आर सेइंग समथिंग. सो विवेक भाई, आपने एक जर्नी बताई. सो आई जस्ट टेक योर मैथ्स एग्जांपल. सो क्या था, मेंटर क्या करता है, आपका देखने का नजरिया चेंज कर देता है. करेक्ट. राइट. मार्केट्स, विवेक भाई, बहुत ही न्यूट्रल जगह है. उसको पता नहीं विवेक बजाज जी कौन है, कौशिक जी कौन है, सौरदीप जी कौन है, चेतन भाई कौन है, सानंद, किसी को नहीं पता. उसको पता है कि जो बंदा सही है उसको पैसा देना है, जो बंदा गलत है उससे पैसा लेना है. राइट. जो ईगो आ जाता है, प्राइड आ जाता है, फियर आ जाता है, वो हम सब में आता है, बरोबर है. मार्केट में नहीं है. तो मेंटर का यही काम है अल्टीमेटली. अगर आपका फियर है उसको न्यूट्रलाइज करना. देखिए, फियर और ग्रीड कभी जा नहीं सकता विवेक भाई, तब तो फिर अपने साधु संत बन जाएंगे, फिर वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स. तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे अपने कर सकते हैं कि मेरे को डर लग रहा है. लॉट ऑफ अस व्हेन वी हैव बिग लॉसेस, यू नो, वी हैव दैट एक्सपीरियंस इन दैट माइंड. और वो जब हम लोग ट्रेड करने जाते हैं, हाथ कांपते हैं, पसीना छूट रहा है, कि वो पुराना लॉस का एक्सपीरियंस माइंड में. तो मेंटरशिप क्या करते हैं कि आपको उस एक्सपीरियंस से आगे ले जाता है. मेंटर आपको हेल्प करता है, वो खुद ट्रेड लेता है, आपको खुद बताता है. सो it's not that mentor is perfect. There is nothing called perfect. But what is important is a mentor will show you when to exit at a loss. ये बहुत बड़ा चीज है जो आप स्ट्रगल करते हो. प्रॉफिट में तो देखिए, कहाँ राइड करना है वो इंपॉर्टेंट है. प्रॉफिट बुक कहाँ करना वो इंपॉर्टेंट नहीं, इतना राइड कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर. सो ये दो पॉइंट आपको हमेशा मेंटर से सीखना पड़ेगा, कहाँ निकलना है और कहाँ अपने राइड कर सकते हैं. सो प्रोबेबली विवेक भाई सीइंग है, आपको याद होगी. तो व्हाट मेक्स यू अ गुड ट्रेडर इज हाउ कैन यू मैक्सिमाइज योर गुड डेज इनटू द बेस्ट डेज. आपका जो अच्छा दिन है उसको आप कितना बेस्ट बना सकते हैं, और जितना आपका खराब दिन है उसको आप कितना कम खराब कर सकते हैं. योर वेरी बैड डेज इनटू बैड डेज इफ यू कैन कन्वर्ट, दैट विल मेक यू अ सक्सेसफुल ट्रेडर. और कहीं ना कहीं क्या होता है कि मेंटर आपका क्या है, ग्राउंड वर्क ले करता है. वो हो नहीं सकते कि आप, वो जरूरी नहीं आपको वही फॉलो करना है. सो देयर आर सो मेनी पीपल हु कॉल अप आफ्टर सो मेनी इयर्स दैट आपने ये सिखाया था, ये मेरे एक बेस बन गया, इससे मैं मॉडरेट करते करते यहाँ पे सर्वाइव कर रहा हूँ. राइट. सो आप आते हैं क्या हीरो बन के, लेकिन जब आप मैच्योर होते हैं फिर आप क्या करते हैं, you know that between 0 and hero, that is 100, there is 1 and 99. So there is life between 1 and 99 also. There is not between 0 and 100. That is what probably this mentorship program or any mentorship program should focus on. सही है. सो एक बात तो तय है कि मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है. एक हैंड होल्डिंग गुरु की रिक्वायरमेंट है, हर डोमेन में है, तो इसमें भी है. तो डेफिनेटली ऑल ऑफ यू हु आर देयर इन द मार्केट, आपको एक मेंटर तो ढूंढना चाहिए, गुरु ढूंढना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ हु द पर्सन इज. यहाँ पर तो हमने 5 खड़े कर दिए, 3 एसोसिएट्स भी डाल दिए ताकि आपके साथ पूरे टाइम लगे रहेंगे हम लोग. बट अगर आपको कोई और भी मिले और आपको लगता हो कि इसके साथ मेरा मन मिलता है, तो डेफिनेटली आपको एक मेंटरशिप करना चाहिए. बिकॉज ट्रेडिंग ऐसा ऑक्यूपेशन है, लोगों को लगता है कि ब्रोकिंग अकाउंट खोल दिया, पैसे डाल दिए, तो चलो चलते हैं. तो डजंट वर्क दैट वे. बिकॉज इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, you have to go through that rigor. If you want to become a lawyer, you have to go to that rigor. And if you want to become a trader, you have to go to that rigor. एक और बात बोलूंगा, मैं बोलता कुछ ज़्यादा ही हूँ, बट बोलने दीजिए. एक और बात, why is a medical profession called practice? Why is a lawyer called practice? Because the theory of practice makes a person perfect. That works best in that kind of an occupation. Trading में भी वैसा है. बट ये जो प्रैक्टिस करने की जर्नी है, यू ऑलवेज वांट टू प्रैक्टिस द राइट वे. कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो वो आर्टिकलशिप करता है, करेक्ट. कोई लॉयर बनता है तो उसके बाद वो इंटर्नशिप करता है कहीं पे, राइट. ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट डे ही वकीलत में जाके अपने चालू कर देता है. नहीं, द पर्सन हैज टू वर्क अंडर सम मेंटोर.
So the whole idea of mentorship is to give you that combination of learning and experience while you are there in the market, building a base for yourself to become a successful market participant. So I hope to see many people looking at the essence of this program, explore, talk to our team, visit elonmarkets.com/tmp, see the format. And if you feel you want to become a trader, then this is a program for you. If you are not sure whether you want to become a trader, first you have to answer few questions which is relevant कि ये मुझे करना है कि नहीं करना. But once you have a kind of a conviction क्या ट्रेडिंग करना चाहिए, एक बार अटेम्प्ट तो बनता है, क्योंकि ऐसा ऑक्यूपेशन है, अगर आप सही हो गए ना तो देर इज अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू. तो ये बनता तो है, तो ट्राई करने के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है. एनीथिंग एल्स यू गाइस वांट टू ऐड? नाउ आई विल ट्राई टू कीप माई सेल्फ शॉर्ट. तो आप लोग में से कोई कुछ अगर बोलना चाहे तो आई एम ओपनिंग अप दिस. Sir, I would like to add some Sure. greed to it, because I have to. Majority of the mentorship program people take in India are on equities, whereas I feel that currency market should also be ventured. Let me tell you why. One lot GBP INR contract is almost of 90,000 rupees or 95,000, and you just take about 3,000 rupees margin to take an exposure. So currency market actually gives very good return, and with small amounts, say 1 lakh, 1 lakh 20, 50,000, you can start your journey as a small scale. But you should have a mentor or in this side, in this asset or any asset class to guide you, so that you don't make my mistakes of 8 years of loss making. Maybe it was small, but 8 years of loss making nonetheless, 8 years of losing trades making. So your that painful journey can get short through the right mentorship. Absolutely. Thank you, You sir. made Thank a you for very valid point, Saanando. And I've been, and people know that I've been such a strong protagonist of, currency market. मैं सबको कितना बोलता हूँ, currency करो, because it is much stable, it gives better predictability, and there are some unexplored instruments. Like for example, आपने GPP बोला, कम पैसे के अंदर में अगर आप उस मार्केट को ट्रैक करते हो तो अच्छा पैसा बना सकते हो. फाइनली वी ऑल आर हियर टू मेक मनी. वो थर्सडे एक्सपायरी बैंक निफ्टी स्ट्रैडल ही क्यों करना है? देर आर मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज. हम क्यों उसी में साइक्ड आउट हो रखे कि वो 920 स्ट्रैटेजी करूंगा मैं और कुछ नहीं करूंगा. वो जब तक आप अपना दायरा बड़ा नहीं करेंगे, आप खुल के नहीं सोचेंगे और सही मायने में सक्सेसफुल कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे. थैंक यू सनंदो फॉर हाईलाइटिंग दिस. और मल्टी एसेट तो ट्रेड करना ही चाहिए सर. पता नहीं अपना मुंह जो किस में मिल जाए, कमोडिटी में मिले, करेंसी, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में, किसको कहाँ सेट हो जाए पता नहीं चले. एकदम सही है. एंड विद द राइट माइंडसेट. करेक्ट. सर एक एग्जांपल छोटा सा देना चाहूंगा कि या प्लीज गो अहेड. कल हमारे टीएमबी के मेंटरशिप में एक स्टूडेंट है, उनका मुझे शाम को एक कॉल आया था कि सर आज मेरे को ट्रेड नहीं मिला कुछ भी, एंड आई वाज सिटिंग आउटसाइड. सो आई हैड मेंटर्ड हिम कि पूरे बैच में मैं बताता हूं उनको कि जब आपका सेटअप बने तभी एंटर करना है. वो उनको बहुत मेंटल रिगर के थ्रू हो जाते हैं. तो उसका शाम को फोन आया कि सर बाकी सबके प्रॉफिट बने, आज मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं बैठा था. आज सुबह उसका दोपहर को 2 बजे के आसपास मुझे फिर से कॉल आया कि सर आज मेरा 85,000 का प्रॉफिट हो गया. तो कल का और आज का मिलके सब कुछ आ गया. सही So, है. it is important to wait for your setup. सही है. तो हम लोग ये क्या करने वाले हैं, क्योंकि सेटअप आपने कह दी तो मेरे माइंड में बात आ गई. एवरी वन ऑफ अस वी हैव यूनिक सेटअप. सूर्यदीप का अपना सेटअप, सनंदो का अपना सेटअप, कौशिक का अपना सेटअप, चेतन भाई का एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड प्रूवन सेटअप जो वो यूज करते हैं पैसा बनाने के लिए. तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, पहले तो आपको पूरा फ्रेमवर्क समझाएं, फिर उसके बाद वो सेटअप दिखाएं और वो सेटअप में आपको तैयार करें, ताकि ये मेंटरशिप के साथ साथ पैरेलली आपका कमाई चालू हो जाए. क्योंकि जब पैसा बनता है ना तो फिर वो पैसे की आवाज़ है ना, वो बहुत अच्छी प्यारी लगती है. अभी आजकल तो पैसे की आवाज़ नहीं आती है, आजकल SMS की आवाज़ आती है जब बैंक का ट्रांजेक्शन होता है. तो वो होना बहुत ज़रूरी है. तो बाय दैट टाइम यू गेट आउट ऑफ मेंटरशिप, यू विल हैव सम स्ट्रैटेजीज टू प्ले इमीडिएटली. और उसके बाद बिकॉज आपका फ्रेमवर्क इतना सॉलिड कर देंगे कि आपको उस पर और बिल्डअप करने का मौका मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं अपना RS आपको सिखाऊंगा, तो मैं ये नहीं करूंगा कि मेरा RS का स्ट्रेटेजी बता दिया आपको, अरे ये ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये इतना स्टॉप लॉस रख लो, टेक प्रोफिट, काम हो जाएगा. नहीं,
मैंने कैसे आरएस को इवॉल्व किया, मैंने चालू कैसे किया, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या किया, और अब मैं और क्या कर रहा हूं, ये पूरा जर्नी मैं आपको दिखाऊंगा. देन ओनली यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि अरे यार ये ऐसे हुआ है, और मैं ऐसे इसको क्यों नहीं कर सकता हूँ. देयर हैव बीन सो मेनी मेंटीज जो आके मुझे सिखाते हैं कि सर आपने ऐसे कभी नहीं सोचा, आप ऐसे करिए, इससे और बेटर रिजल्ट आएगा. तो एक्चुअली देखा जाए तो थोड़ा हमारा स्वार्थ भी है कि हमको अच्छे मेंटी मिले, तो वो हमारी ट्रेडिंग सिस्टम को और बेटर कर देते हैं. तो सिखा भी दिया और साथ में अपने ट्रेडिंग सिस्टम को इम्प्रोवाइज भी करवा दिया. तो ये तो सीक्रेट रिलीज हो गया चेतन भाई. हमने अपना स्वार्थ भी बता दिया सबको. विवेक भाई, मैं तो खाली 2 ही स्टेटमेंट बोलूंगा. सक्सेस के पीछे एक फॉर्मूला है. एक तो है तकदीर, जो अपने हाथ में नहीं है, लक. एंड द सेकंड वन इज हार्ड वर्क, मेहनत. मेहनत अपने हाथ में है. और वो बोलते हैं ना, तकदीर, मेहनत और सही जगह और सही आदमी, ये कॉम्बिनेशन होता है तब सक्सेस मिलता है, राइट? सो इवन बिफोर यू आर ज्वाइनिंग अ मेंटरशिप प्रोग्राम, थिंक. ये नहीं बोलो कि कहीं यहाँ आना है, कहीं यहाँ जाना है. जहाँ जिसको आप सोच रहे हैं, तो पहले ये चीज समझ लीजिएगा, हार्ड वर्क, राइट पीपल, राइट प्लेस, एंड लक will give you success. So these are my parting words. एकदम सही, एकदम सही. Thank you so much. And before we leave, want to leave you with this screen page that it's elanmarkets.com/tmp. यहाँ पे you can fill up the form if you want to connect with us or call someone. अगर आपको feedback देखना है, so there are feedbacks which has been given by our students. Please go through these feedbacks. You will get a very solid review. And in case you want to connect with us, feel free to connect with us. Right. So thank you so much, all 4 of you, for becoming part of this lovely initiative of TMP. And just keep doing what you are doing good. And friends, एक हमारी तरफ से कमिटमेंट है कि we will be very honest and very sincere with our work, because we really want to support people who want to become trader, because of it's high time that Indian society starts recognizing trading as a rewarding, stable, and better occupation. Thank you so much. Bye bye, guys. Thank you so much for becoming part of this session, and looking forward to host you guys in the next session. Bye bye. Please take care.